Okay, hello all. So today we are going to practice the past papers question of the force and motion. This question here from paper May June 2011, ये वेरिएंट है 2.1 का और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है. Figure 2.1 shows the sky tower falling vertically downward at terminal velocity. Now, अगर टर्मिनल वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड है, जीरो एक्सेलरेशन. जीरो एक्सेलरेशन कब होती है? जब फोर्सेस बैलेंस होती हैं. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. Arrow X and Y shows the two main forces acting on the sky tower. State the name of force X and the name of force Y. So surely if the force is acting downward, तो downward कौन सी force होगी? That will be the weight of the sky tower. और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, the name the force that always act opposite to the motion. Yes, resistance. और ये कौन सी रेजिस्टेंस होगी? एयर रेजिस्टेंस. ओके, एक्सप्लेन वाई फोर्स वाई एक्ट अपवर्ड. फोर्स वाई ऊपर की तरफ क्यों लग रही भाई? वी जस्ट हैव आंसर दिस वन बिकॉज resistance always act opposite to the motion. Since the sky tower is falling down, so resistance act opposite to the motion, hence it will act upward. When the sky tower first started to fall, the forces X and Y were unbalanced. Describe and explain the effect of the unbalanced forces on the motion of the sky tower. अगर forces unbalanced हो तो क्या होता है? उस सूरत में एक net force produce होती है, और जब net force होती है तो body accelerate करती है in the direction of the net force. When the sky tower just started falling, the resistance was very less and weight was more than the resistance. So you can say that weight will be greater than air resistance, जिसकी वजह से net force कहाँ act करेगी? Downward act करेगी. तो it means the sky tower will accelerate downward. So describe and explain. दो बातें बतानी है 2 मार्क्स के लिए. The effect of the unbalanced forces on the motion of the sky tower. So weight was greater than resistance. Unbalanced force acts downward, hence sky tower also accelerate downward. आपने कोशिश करनी है कि विद इन द लाइन लिखें. अगर विद इन द लाइन नहीं आता तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कोशिश करें वर्ड को रिफ्रेश करें ताकि आपको इस बात की हैबिट हो सके. हाँ, एग्ज़ाम में इजाज़त होती है कि आप आउट ऑफ द लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हार्डली परमिट होता है. कोशिश करें कि विद इन द लाइन लिखें. दैट्स क्रिएट अ गुड impression. State what happened to the size of the force X and the size of the force Y as the sky tower fall and reaches the terminal velocity. जब तक terminal velocity अचीव नहीं होगी तो स्पीड इंक्रीज होती रहेगी और स्पीड के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होती रहेगी. बट वी नो दैट द वेट विल रिमेन सेम. सो डाउनवर्ड फोर्स क्या है? X विच इज वेट, और अपवर्ड फोर्स क्या है? Y विच इज एयर रेजिस्टेंस. सो
x remains constant while y keeps on increasing. सिर्फ स्टेट करना है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. ओके, दिस क्वेश्चन हियर, स्टेट व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन. 2 मार्क्स के लिए 2 बातें एटलीस्ट लिखेंगे. इट इज एन opposing force and always acts opposite to the motion. अपने आंसर को कोशिश करें मैच करें गिवन मार्क्स से. जितने मार्क्स से एटलीस्ट उतने पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करें. Figure 2.1 shows 2 horizontal forces that act on a car. Force B is caused by the air resistance and friction. The car is traveling along the straight level road. Forward force A and the backward force B are equal. Describe the motion of the car. Since the two forces are equal, whenever the two opposite forces are equal, that causes a balance forces. Balance forces का मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो. नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म. सो कार will move with uniform velocity. Enough to say एक नंबर के लिए. The mass of the car is 800 kilogram. Force A increases to 5000 Newton. This causes the car to accelerate initially 1.5 meter per second square. Calculate the size of the force B. देखिए मास गिवन है, फोर्स गिवन है. एक फोर्स गिवन है, एक फोर्स निकालें. इफ़ यू रिमेंबर ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. F इक्वल टू एम ए. एफ क्या है? नेट फोर्स. एम मास, ए एक्सेलरेशन. और इसी फार्मूले की एक मॉडिफाइड फॉर्म क्या बताई थी आपको? एफ एफ फॉरवर्ड फोर्स माइनस एफ बी बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए. अच्छा, फॉरवर्ड फोर्स इस केस में क्या है? फोर्स ए. और फोर्स ए कितनी है? 5000 न्यूटन. सो लेट मी राइट 5000 माइनस एफ बी. एफ बी रिक्वायर्ड है, बैकवर्ड फोर्स है. एफ बी क्या है? बैकवर्ड फोर्स विच इज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एम. मास कितना है? 800 kg. और एक्सेलरेशन इज no need to write the units here. Acceleration is 1.5. So 800 into 1.5 will be 1200. So FB कितना हो जाएगा? 5000 minus 1200. So let me calculate. 5000 minus 1200 is going to give you 3800. 3800 Newton, and that will be the force P. आंसर को कोशिश करें आंसर स्पेस में ही लिखें. कोशिश करें कि आंसर आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हो. 3800 न्यूटन
इज योर आंसर. यूनिट लिखनी है, यूनिट के मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं. Force A remains constant at 5000 Newton. Explain why the acceleration decreases as the car travel along the level road. हाँ जी. So acceleration क्यों कम हो रही है? What we have discussed कि acceleration proportional होती है net force के. ज़्यादा नेट फोर्स होगी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, कम नेट फोर्स होगी कम एक्सेलरेशन होगी. अगर एक्सेलरेशन ड्रॉप हो रही है तो इसका सिंपली एक मतलब है कि नेट फोर्स रिड्यूस हो रही है. और नेट फोर्स कब रिड्यूस होगी? जब एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी. एयर रेजिस्टेंस किस वजह से ज़्यादा होती है? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द स्पीड. सो सिंपली आंसर क्या रखेंगे? एयर रेजिस्टेंस increases with the speed, hence net force reduce and acceleration also. एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है. जब एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो नेट फोर्स ड्रॉप हो जाएगी. नेट फोर्स ड्रॉप होने की वजह से एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी क्योंकि नेट फोर्स एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. Okay, a car of mass 800 kilogram climb on a hill rises vertical distance 200 meter. Calculate the gain in potential energy. We have not discussed yet this chapter, but a simple thing. If you have learned, you can do that. The formula will be gravitational potential energy is equal to mgh. मास है हमारे पास 800. g की वैल्यू पहले हम 10 लेते थे, अब हम लेंगे 9.8. चेंज हो चुकी है. और हाइट कितनी? 200 मीटर. सो लेट मी मल्टीप्लाई 800 multiply by 9.8 multiply by 200 is going to give you 1568000. 1568000. आंसर को कोशिश करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे. सो दैट गोइंग टू बी 16123445 जूल्स. एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है हमारे पास. ओके, वन मोर क्वेश्चन. This question from May June 14, paper 2, question number 1. Figure 1.1 shows a lorry accelerating in a straight line along the horizontal road. The driving force on the lorry in the forward direction is D and the total backward force on the lorry is B. State and explain whether D or B is larger forces. See, the keyword is लॉरी एक्सलरेट कर रही है, इसका मतलब है स्पीड अप हो रही है. तो अगर एक्सलेरेशन फॉरवर्ड है तो फिर नेट फोर्स भी किस तरफ होगी? फॉरवर्ड होगी. और नेट फोर्स अगर फॉरवर्ड है तो इसका मतलब है कि ड्राइविंग फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द बैकवर्ड फोर्सेस. ओके, सो स्टेट एंड एक्सप्लेन, दो बातें, वेदर डी और बी इज लार्जर. सो आंसर क्या होगा? फोर्स डी इज लार्जर बिकॉज एक्सप्लेन करना है. लॉरी इज एक्सेलरेटिंग forward. Suggest one possible cause of the backward force B.
सो एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड हो सकता है, कोई भी एक लिख दें, दो मत लिखिएगा, अगर एक कहा है तो एक ही लिखें, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. सो एयर रेजिस्टेंस इज इनफ टू से. The weight of the lorry is 300,000 Newton. Gravitational field strength is 10 Newton per kg. Calculate the mass of the lorry. ये फार्मूला आपको याद होगा, वेट का फार्मूला W इक्वल्स mg. अच्छा, ये पुराना क्वेश्चन है तो जिस वक्त g की वैल्यू 10 होती थी, अब हम कैलकुलेट करेंगे 9.8 से. सो वेट कितना है? 300,000. मास इज रिक्वायर्ड एंड g की वैल्यू इज 9.8. सो फिर मास कितना हो जाएगा? 300,000 डिवाइड बाय 9.8. 300,000 डिवाइड बाय 9.8 and the answer is 306,30612.2 किलोग्राम. मास की यूनिट क्या होती है? केजी. अच्छा, यहाँ पे हमने ये आंसर जो लिखा है, दिस इज कैलकुलेटेड आंसर. अब जो इसका राउंडेड ऑफ आंसर, राउंडेड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा? 31,000 केजी. टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं. The resultant force on the lorry is 15,000 Newton. Calculate the acceleration of the lorry. Same formula. Mass we have already calculated. Formula use करेंगे हम. F equal ma. They already have given the resultant force directly. तो 15,000 यहाँ पे लिखा हमने. Mass. I suggest you कि जो calculated value है वो आप use करें further calculation में. That is 30612 into acceleration is required. तो acceleration कितनी हो जाएगी? 15,000 divided by 30612. The answer is 0.49. 0.49. टू सिग्निफिकेंट फिगर में ही है. यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If you are going to check these answer with the marking scheme, you may not find these answer correct because we are using a different value of g. जो मार्किंग स्कीम में जो आंसर होंगे वो g की इस वैल्यू से कैलकुलेट होंगे 10. अब हम यूज कर रहे हैं 9.8. Later the lorry turns a corner at constant speed. Explain why the lorry accelerate even though the speed is constant. जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी सर्किल में तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. एंड सिंस द वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाता है, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन. सो एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से भी सर्किल में मूव कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. Explain why the lorry accelerate even though moving with constant speed. Due to change in direction and acceleration is produced. Okay, this question from winter 2010. A cricket ball has a mass of 0.16 kilogram and it hits the bat with a speed of 25 meter per second after being in contact for 0.0013 second. The ball rebounds with the speed of 22 meter per second in the direction opposite to the original direction. State the difference between speed and velocity. So you can write any of the one difference. Like I'm going to write here, speed is scalar while velocity is a
vector quantity. आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड हैज़ नो डायरेक्शन वाइड वेलोसिटी कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट डायरेक्शन. कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द क्रिकेट बॉल. अच्छा, अब यहाँ ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. देखिए, अगर बॉल जा रही है इस तरफ, पहले बॉल जा रही थी इस डायरेक्शन, बट व्हेन इट हिट्स द बॉल बैट, उसने बैट को हिट किया, तो हिट करने के बाद जब वो रीबाउंड होगी तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. एंड सिंस वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर हम इसकी साइन को चेंज करेंगे. ठीक है. इट मीन्स कि अगर जाते हुए उसकी वेलोसिटी 22 थी तो वापस आते हुए कितनी हो जाएगी, 25 थी तो वापस आते हुए 22 हो गई, लेकिन ये होगी -22 बिकॉज इट हैज़ चेंजेस द डायरेक्शन. ओके. सो अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है मेरा बेटा? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू. सो 25 माइनस -22, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. और 25 प्लस 22 विल बी 47 meters per second. 47 meter per second. Okay, the average acceleration of the ball whilst it is in contact with the bat. Acceleration का फार्मूला क्या होता है? Delta V upon t, change in velocity divided by time. We already have calculated change in velocity which is 47. और बॉल कितनी देर के लिए कांटेक्ट में रही? 0.0013 सेकेंड के लिए. तो 0.0013, 47 divided by 0.0013. Answer is 36153. 36153. इसको मैं राउंड ऑफ करूं 2 में तो दैट विल बी 36,000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ह्यूज एक्सलेरेशन, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है. जितने शॉर्ट टाइम में चेंज होगा उतनी ज़्यादा एक्सलेरेशन होगी. एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स का फार्मूला क्या है? F is equal to ma. Mass of the ball was given 0.16 kilogram. So 0.16 into acceleration कितनी? 36,000. The answer is huge. 1301538,462. So we can write 1.3 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to the power 9 Newton. So this much force. Let's check the answer again. Hold on. $36,000 multiplied by 0.16. Yeah, I made the mistake. Answer is 2250. So अगर 2 significant figure में लिखेंगे तो 2, 3, 1, 2, 3, 4 Newton. Okay, so that's all for today. Next class में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोमेंट. टेक केयर.